धड़धड़ बहुत से बेबान लड़की में गान गाड़ीवर दारू नई दिकान सड़का दिखाए प्यार दिखाने में एक महीना धीरे पे दीवाना वाईफाई ले उगट की वाईफाई में बैठा हूँ नाम तो बताओ गाड़ीवर वो सीरेन सो जीएम गली याद है राम घर इसका आ रहा ही नहीं है उल्टा गा मैं बराबर कार उल्टा गाना दीदी भाई गाता हो रहा है आजकालच्या युगामध्ये भरली आहे कला माणसं फक्त बोलतात वर वर चला वेगवेगळ्या माहितीचा वाहतोय जरा म्हणून तुम्हाला सांगतो मी भरपूर कष्ट अरे आपल्या मुंबई शहरामध्ये गरिबी खूप वाढते अन्यायकारी लोकांना सरकार नोटा चालते हे राजकारण बीजकारण आपल्याला काय कळत नाही मेहनत केल्याशिवाय सांगतो काम काय कळत नाही सरकारी कामासाठी कोणता माणूस कळत नाही ओळख आणि पैशाशिवाय कामही वळत नाही गांधीगिरीच्या मार्गावर आता कोणी चालत नाही छोट्या मोठ्या मॅटर मध्ये कोणी डोकं घालत नाही देशामध्ये चालले आहे नोटा आणि नेतेगिरी कधी बंद होणार या नेत्यांची दादागिरी गरीबाच्या पोटावर ठेवली गेली लाट आहे श्रीमंताला झोपायला सोन्याची खाट आहे काळे धंदे करून सुद्धा यांच्या मनात काट आहे अरे यांच्या मनात दारा मतलब वो एक आर्ट फॉर्म का प्लेस है क्योंकि इसमें खाली हिप हॉप नहीं चलता है सब आर्ट फॉर्म चलती है अब अपने इंडियन म्यूजिशियंस भी इधर है और क्लासिकल सिंगर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स भी कोई प्ले करते हैं Yo, petti kenden tote magdam suda maharaja nan kayyil pana mille peena mayyanaliya sottu danen pere kettaladro nan sivaji da tamil vesatayanga da veera ponda tamilanda solita poladu kokkalakin ponda billonda dattame kirpa paklam vesi sindi kachapadu nan katakulen kadavale yarum kantade namakarpu vano kadavul enne kapan isige adana isige yenda terevan sivaji variya ketti ni bon kayyal tala pode isige mor jadi dana dilille veru paade dara vi अगर मेरे को किसी को बताना है तो कोई सुनने वाला नहीं है अगर मेरे को आवाज़ उठाना है किसी चीज़ के ऊपर तो कोई सुनने वाला नहीं अगर मैं ये रैप में कर सकता हूँ तो मेरी आवाज़ दूर तक पहुँच रही है अभी तक नहीं अच्छे दिन आएंगे यहाँ फैल रही झूठी खबर वही और उसका अपमान करते इन्हें आती शर्म नहीं झूठे है वो जो बोलते देखते धर्म नहीं मेहनत का फल मिले किसको इसकी सबर नहीं देश तरक्की करे देख रहे हम ख्वाब वही भ्रष्टाचार कैसा रुके इसका कोई जवाब नहीं ये बातें करके सोचे हमें कोई लाभ नहीं बर्बाद हो गया देश सोचते हर दम वही भारत महान ने उठा देख कदम नहीं स्वच्छ भारत अभियान फिर भी कचरा साफ नहीं इन सारी बातों का यहाँ कोई इंसाफ मेरे लिए ज़्यादा भी बोले तो हैप्पीनेस है हेवन और स्वरम बोल सकते हैं मेरे लिए हम लोग को टाइम लिमिट नहीं होता है हम लोग कभी भी घूमते हैं कभी मजा करते हैं सबके साथ मिल के रहते हैं किधर भी खेलते हैं मतलब इतना छोटे में गली में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं प्लास्टिक बॉल से बहुत मजा करते हैं इसका मेरे लिए हेवन है हैप्पीनेस है दारा भी कह सकते मुंबई 17 जगह दिखता थोड़ा गंदा पर दिल है साफ सुथरा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब रहते करके बाजू में चाय हम पीते हैं हमारे बटके ताज में गली में आके देख तू रास्ता भूल जाएगा चमड़गिरी किया तो चप्पल से मार खाएगा धोएगा भाई कपड़े डोबी घाट में गरीब लोग सोते हैं भाई वो भी फुटपाथ में रस्ते कमाल सस्ता उसे बेचने वालों से भी बांटू लेता हफ्ता खेलने जगह नहीं तो रोडे मेरा मैदान बॉल लगा तो आदि का क्यों सब में अपना पहचान सिर के ऊपर देख तुझे मिलेंगे वायर बारिश में पानी भरा उसमें कूद के तहर भारत का विकास है भाई अपने ही यादों में नेता वचन देते हैं भाई उनके ही बातों में खातों में नहीं भाई एक नवा पैसा फिर भी हम जीते अंबानी के जैसा हेलो
Yeah, if it's dangling, it's gonna go up. 2016, I and a friend of mine, Sachin Pillai, we went to Dharavi for a few days and we shot this documentary called Dharavi also, which it's basically a short 10-minute documentary introducing everyone to what was happening in Dharavi at the time, because it had a hip-hop scene that was quite exploding at the time. There were a lot of artists who were getting a lot of attention. In terms of coming from a community and place which is neglected, where you have like sort of social neglect as well as crumbling infrastructure, and the fact that you're living like this and the stories that are your stories are not being represented in popular culture, which is why hip-hop became quite big in the US in the 90s, for example, in that it was representing what was happening in, like, it was documenting what was happening in inner city America at a time when popular culture didn't really reflect that reality. I think they saw in hip-hop like a form of music, a form of culture that they could use to try and get their voices heard. It was a form that anyway kind of favored the underdog story and the idea of telling what was going on around you. हिप-हॉप बोलेगा ना तो मतलब मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी है हिप-हॉप. Hey, check. Mumbai 37 representing Gang Destroy. हाँ क्या बोलते हैं मेरा क्या भाई? बोलता है मेरा भाई? कैसे चालू कर देगा. हाँ चलना बजना भाई. मुंबई सपनों के शहर में मेरे आके देख, गरीबों के आंखों से कैसे बहते ये आंसू देख, पॉलिटिकल रोल देख, राजनीति झोल देख, पुलिस से कैसे मांगे मदद ज्यादातर तो चोर देख. यहाँ चुप रही क्यों दब रही आवाज है, जिंदा तो ये सब पर अंदर से सारे मर चुके, आंखें तो खुली है पर अनजान बन के चल रहे. क्या स्टार्टिंग में लोग कुछ पता भी नहीं था. मैं स्कूल जाता था, ऐसा चंपू ऐसा बाल बिल रखने का, स्कूल के बच्चे लोग हेड भगाते थे तो मैं डरता था, मतलब बाहर भी नहीं निकलता था जल्दी. खेलने में आते थे हम लोग पतंग उड़ाने के लिए, तो पतंग पकड़ने के लिए आया था मैं भागते हुए. तो मैंने जब गोकू को देखा था तो गोकू बैक फ्लिप मार रहा था, तो वो टाइम पे मैं निंजा थोड़ी बहुत देखता था. तो मेरे को लगता था कि हाँ वो मतलब वो सब बनने के लिए निंजा बनना पड़ता है. तो मैं देखा बैक फ्लिप मार रहा है, उल्टी गुलाटी मार रहा है, तो बोला अरे ये तो सेम हथौड़ी के जैसा करता है. उसको देख के हम लोग ने स्टार्ट किया. तो पता नहीं था हिप हॉप हम लोग बोलते थे गुलाटी बोलते थे वो टाइम पे. लोकांच्या डोक्यात घालू गोळी अशी मराठीची बोली, खेळतो रक्ताची मी होळी, अत्याचार अहंकार वाढू लागला जगेल कसा कोणी, माणसाचा शत्रू माणूस झाला अजून नाही कोणी, हमले करतात तिकडून बॉम्ब टाकतात मारतात गोळी, फक्त मागून वार करला. मतलब मेरे दिल में पहले से ना कुछ तो मैं जब मतलब बचपन से मेरे दिल में ना कुछ मतलब सवाल रहता था कि इधर गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है. तो एक तो मैं कुछ बड़ा और नहीं हूँ कि मैं किसी को समझा सकूँ या जाके किसको बोल सकूँ. तो ये हिप हॉप एक जरिया है कि जो दिल की भड़ास है, जो मैसेज है, जो गलत चीज़ हो रहा है या कुछ हो रहा है, और मैं लिखता हूँ सिर्फ सोशल पे, और जो गलत चीज़ हो रहा है जो मुझे दिखता है और कुछ मैसेज देता हूँ या फिर मेरे बारे में बताता हूँ. मेरे बारे तो ज़्यादा नहीं बताता मैं, लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि लोगों को समझ में आए कि क्या है ये चीज़. I remember in the early 2000s, like hip hop was a very big thing in the clubs. Like hip hop DJs were really big. You could go to any club in Bombay at around 2005, 6, and odds are that they'll be playing commercial hip hop music, they'll be playing hip hop music. So and then around the same time you had rappers starting, but I mean in the beginning everyone was kind of just winging it. They were recording stuff on using those headset mics on their computers, and there's no real recording, no real like studio quality production or anything like that. There's also the insignia that combat text battle community, which is quite interesting. You had a lot of artists kind of finding each other
figuring out that there are other people doing what they wanted to do, and building that sort of community. That took a while, and then like by 2011, 12, 13, you had like a proper hip hop scene going everywhere. But most people were still rapping in English, following the template set by American rappers. And that I think kind of changed around 2012, 13, 14. And a lot of artists kind of switched. Either switched or a lot of new artists came in who started off rapping in either Hindi or Marathi or Tamil, or like a bunch of local regional languages that spoke to the community around them and the communities they were coming from. So the genre hip hop, itself has originated back in the Bronx. And when I say Bronx, it's not about the location as much as it is about the feeling of, aggression, depression, oppression, a completely revolutionary movement where they wanted to fight against the society, not in the sense that there was something that they wanted to prove, but they were being suppressed, and that's where the voices came up. They found a better way of, revolting, which is through an art form, and the art form that they chose was hip hop, because they considered hip hop to be a very free form of expression, and whatever they felt like they could speak about it, they could express in the form of graffiti artwork, through rap, through b-boy. So hip hop became a motivation and inspiration back in the Bronx, where it originated. Because of the circumstances again. It percolated the same way here in India and in many other parts of the world where similar situation was arising and people wanted a platform to speak up. While there were different platforms also that were given, but considering the the setup that Bronx had, Dharavi also has a similar setup. कैफ़े में काम करता था जिसका नाम बॉम्बे टू बार्सिलोना था, और वहाँ पे सब अनाथ बच्चे लोग काम करते थे, तो मैं वहाँ पे काम करता था और मैं वहाँ पे इतना टाइम काम किया और वहाँ के जगह से इतना इतना फीलिंग्स आया वो जगह के लिए और इतना अच्छा लगा, वो जगह ने रियली मेरे को टच किया, तो मैंने वो चीज़ को रैप में लिखा, मैंने उसको डिस्क्राइब किया वो कैफ़े को। शॉप बोले तो बहुत कुछ अंदर मेरा कैफ़े शॉप, प्यार का गहरा समंदर मेरा कैफ़े शॉप, ये मेरा कैफ़े शॉप जहाँ करता मैं हिप हॉप, बनाता कॉफ़ी एकदम टिक टॉप, मेरे कैफ़े टीम करते न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे नए डिशेस ड्रॉप, यो साई मेरा नाम है, बरिस्ता मेरी पहचान, मेरे कैफ़े शॉप में क्लाइंट्स आते सुबह शाम, यहाँ कोई ना गुलाम, यहाँ होता दिल से काम, अमीर गरीब एक समान, अमीन भाई ने किया ईश्वर का निर्माण, सड़कों के बच्चे जो ईश्वर के है फरिश्ते, जिनके कोई नहीं है रिश्ते, बॉम्बे टू बार्सिलोना देता इनको पहचान, जर बच के संभल के ये बॉम्बे टू बार्सिलोना। जो चीज़ मैं डेली लाइफस्टाइल में एक्सपीरियंस करता हूँ और जो चीज़ मेरे को फील होता है तो मैं वो लिरिक्स में अपने उतारता हूँ। मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मैं धारावी जैसे जगह पे बॉर्न हुआ। Bored sometimes, man, because of these specs. Time flies, you gotta do what you gotta do now. मैं तो बोलूँ कम, ज़्यादा मैं तो करके दिखाऊं, आगे लगा दूँ जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँ, slaying the party for me and my girls, nobody can do this the way I do, अपनी ताल पे सबको नचाऊं, मुझे डरना किसी का, मैं तो करूँ जो मैं चाहूँ। I started rapping at the age of 16 when rap was not as huge as it was internationally, and my first debut was in Zuban, ABCD. And I think just life unfolded. And so at the age of 16 and coming forward, getting movies like ABCD, Anybody Can Dance, Welcome to Karachi, Welcome Back, Doom 3, Student of the Year 2. It was huge, and it's just coming to me from 16. I was this kid who had I had these big dreams, and them getting fulfilled slowly just kept me motivated. Even though it was not, it was a very male-dominant field. It just kept me motivated, one day it will get where it is now. And I just had that hope in mind and just kept going.
मेरा नाम है गायत्री नाडर और मेरा स्टेज नेम है आईसी फायर और मैं 16 एज की हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जब भी एनुअल फंक्शन में मैं डांस करती थी पहले, तो मैंने एनुअल फंक्शन में देखा था लड़का लोग बीट बॉक्सिंग और रैप करने लग गए। तो मुझे लगा कि स्पीकर से कनेक्ट करके कुछ म्यूज़िक लगा है। तो मैं उसको जाके पूछी कि वो जब भी नीचे आया वो प्रसाद देवेंद्र, तो ये बीट दे सकता है क्या मेरे को डांस बीट आने का। तो ये बोला कि वो बीट नहीं है, हम लोग मुँह से वो बीट बॉक्स कर रहे थे। तो मैंने बोला मेरे को सिखा सकते हैं क्या। एंड वो मेरे को धारावी प्रोजेक्ट लेके गया। जब भी मेरे को रागेश रेड्डी सर मिले थे उधर, तो वो मुझे सिखाने लगा। मेरे को पहला लगा कि जब भी करते वक्त मुझे लगा मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि सब लोग मेरे को पहले बोल रहे थे लड़की लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे वो नेगेटिव थिंग्स आया बहुत सर पे। तो फिर मैं भी कर नहीं सकती करके मैं बोल रही थी, बट मेरे को सर ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू कर सकती है ऐसा करके। फिर मैं चालू की थी, फिर मेरे को लगा मैं कर रही हूँ। I realized that whenever I walked into a studio, I've seen people's heads turn. They've never expected a female to come in. People have been like, okay, there's a rapper coming to feature on this track, and people have just, when I've entered, they've been like, oh, it's a girl. They've never expected a girl to come in. They've always been like, okay, it's by default, a male is a rapper. It's by default. Nobody is going to be other second thought of, oh, that it could be a girl. And then even getting into the studio and people being like, can you rap like a so-and-so male rapper? How can I be a male rapper? Come on, I mean, call him or call somebody who sounds like him. Me being over there and me sounding like him makes no sense. So I think that was, it kind of, gave me that hit that, even being in the industry for so long, being experienced, people still don't, give you that edge where you can be yourself and be that person who's proud of what you're doing. Because end of the day, you are still kind of being considered as, let's put it in that male category. Let's make a sound like like that person. जब बढ़ जाएगी मुस्कुराना देख के, तकलीफ भी कम होती हंसते हुए फेस से। खुद को ऐसा दोष ना करके सब कुछ आता जब से, मेहनत और लगन से करना पार नहीं रास्ते, ना करना खुद को पीछे मंजिल नहीं दूर है। आज जो भी ऊपर मेहनत कर रहे वो मशहूर है, गालियाँ मिलेगी अगर तुझे ये मंजूर है। हिम्मत नहीं है तुझे क्या, तू भी क्या, मैं भी कमज़ोर है। जब भी मैं स्टार्ट की थी तो मेरे मम्मी पापा को नहीं मालूम है, तो मैंने किया करके। जब भी मैं ट्यूशन्स बंक करके जाती थी, तो एक दिन उनको मालूम पड़ा कि गायत्री ट्यूशन नहीं जा रही। उधर से कॉल आया उनको, एंड उन लोगों को बोलने लग गए कि ये क्लास नहीं आ रही है, आप उसको बेचो, ये पढ़ती नहीं है बराबर, ऐसे सब। तो मेरी मम्मी सोच पे लग गई कि ये तो अपन को बोलती है कि रोज़ जाती है, किधर है। तो एक दिन वो मुझे देखी कि मैं धारावी प्रोजेक्ट जा रही थी करके, तो बोलती उधर क्या काम है, इतना लड़का लोग है, तो उधर क्या कर रही थी। तो ऐसे सब बोल रही थी। मैं आई घर पे तो मेरे को टाला बिला चेन बिन डाल दी हाथ में, कि फिर मैं 3 दिन से बाहर भी नहीं गई। तो मैं ऐसे ही घर पे थी। मैं भी एक साउथ इंडियन गर्ल है, तो मेरे घर पे बोलते कि अपने कास्ट पे सब चलता नहीं है, तो कोई भी गर्ल्स रहने दे, तो उन लोग के घर पे ऐसा छोड़ता नहीं है फटक। सबको लगता है कि हिप हॉप ड्रग्स पे है, तो ये सब आने के लिए आपको ड्रग्स पीना पड़ता है, वो ये करके। तो उन लोग उनका माइंड पूरा निकल जाते, तो उन लोग को नहीं होता है कि क्या बोलते हैं एमसीलेट, क्या बोलते हैं आई 17 से बाय धारावी का क्या। चल थोड़ा साइफर करते क्या। देख सुन तेरी औकात है अलग, देख सुन तेरी मेरी बात है अलग, देख सुन तेरे मेरे सोच में फर्क, देख सुन मुझ में तुझसे कई ज्यादा गुण, देख सुन तेरी औकात है अलग, देख सुन तेरी मेरी बात है अलग, देख सुन तेरे मेरे सोच में फर्क, देख सुन अब मुझ में तुझसे कई ज्यादा गुण। 2 बजे की वो रात, रैप की शुरुआत, पन्ने कलम मेरे हाथ, उड़ना चाहूँ फील के साथ, आगे बढ़ूँ खुद के ही दम पे मैं यार। फिर ब्रेकिंग न्यूज बनकर आऊँ मैं ऑन समाचार जैसे आज तक या दूरदर्शन, या ऑन यूट्यूब जैसे कमलेश सुनलोचन। मेरा रैप मेरे साथ बिल्कुल वैसे है, तेरे फेफड़े में रहता धुआं जैसे बे। डाल मेरी बातें अब तू सीधा अपने भेजे में, निकाल दे वो धुआं जो भरा तूने कलेजे में। दिखावे वाली चीजें ना कुछ आने वाला काम कर, बहुत सारी मेहनत फिर तो करना है आराम। जितना चमक दमक दिखता यहाँ उतना ही अंधेर, अगर खूबसूरत फूल तो उनमें कांटों का बस है, जैसे हर रात के बाद में या हो रात सवेर। यह है मुंबई शहर, यहाँ का राज गहरा गहरा। ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले आपका रियल नेम क्या है?
रियल नेम नहीं बताऊंगी बे, जा बे, ये रियल नेम मत पूछ बे। अरे बोलना पड़ेगा। गांड नहीं बे, वो नहीं बे, अभी वो एक लेवल पे जाने के बाद बताऊंगी चाहिए तो अभी। वो मैंने इंस्टा पे एक इमोजी देखा लिट का, तो मेरे को लगा मेरे पे सूट करेगा तो मैंने रख दिया MC लिट। और बॉम्बे 70 तो जुड़ा ही है मेरे नाम से, ये मेरा हुड है तो साथ में रहता है। जाता मेरे सामने जो भी आए साला टिक नहीं पाता, जो तू आया इस दुनिया में घमंड ना करना, एक दिन सुन ले लाला सबको ही है मरना, इस जिंदगी का अब तू थोड़ा यूज करना, I'm clear with my plan, मुझे रैपर ही है बनना। रेस्ट में बता दूं, बॉम्बे 70 में हम लोग जो रहते हैं, कुर्ला वेस्ट जो इलाका है, वहाँ पे कैसा है, डीजे लोग हैं फुल, सराउंडिंग में आपको डीजे मिलेंगे, कैथलिक लोग ज़्यादा है। तो मैंने हमेशा बचपन से पॉप म्यूज़िक सुना है, पहले स्नूप डॉग 50 सेंट ये सब का बजते थे, तो वो सब शॉर्ट अपने को भाई बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। फिर अपना भाई आया हनी सिंह पाजी, तो उसका रैप मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, ब्लू आइज हिप्नोटाइज ख़त्म। हनी सिंह के रैप सुन के मेरे को लगा कि मेरे को अपना खुद का वर्ड्स निकालना चाहिए, फिर मैंने खुद का लिखना स्टार्ट कर दिया। सब कहते हैं ना कोई बंदी रैप कर पाएगी, ऐसा ना है फोटोलेट चैलेंज कर जाएगी, रैप उसका सुन के तेरी गांड जल जाएगी, बॉम्बे की लड़कियां मेरा रैप गुनगुनाएगी, ये बॉम्बे की लड़कियां मेरा रैप गुनगुनाएगी। सीधी बात है, लड़की लोग का एक जैसे मैंने कि रैप में कहा छावे बनाने का घूमने, ये चीज़ से माँ बाप ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं कि इन लोग बाहर जाके कहीं भलती लाइन में ना निकल जाए। रैप करना है तो उनको फुल सपोर्ट है, जैसे मेरे फैमिली का मेरे को है, ये सीन होता है। अगर मैं जैसे नाइट आउट भी हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, पता चल रहा है गाना बज रहा है, हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कौन रोकेगा। और आपको किसी ने बोला है कि मत कर? मेरे को आज तक तो कोई नहीं बोला, बाकी जब बोलेगा तब देख लेंगे। हाँ बड़ी गली में आना है, डायरेक्ट अंदर सीधा ना गली में, चलो ठीक है चलो। करता है, करते हैं सबर किसी पे ये पर सुन सूट ही नहीं करता है, हाँ सूट ही नहीं करता है, क्या सूट ही नहीं करता ये समझ के ले दे तू, अभी अभी खेलता अपन कोई कैसे खेले ले, बचपन चालू किए 6 साल पहले, बेजरूरत नहीं किसी की, चलूं अकेले खेलूं अकेले ढकेलूं अकेले मैं बेलूं अकेले फिर ले लूं अकेले, समझ के ले ले तू ना सीखे समझ के ले ले, अरे तू अरे तो पड़ेगा तेरे कान में, फिर मेरे पास करूंगा तू सीधा शमशान में, और बाल सीधा ध्यान में, तू बहुत छोटा होता मेरी चार बातें ध्यान में, मैं मेरे सब आए जैसे खेल में, अगली को बोलूंगा तू सीधा सीधा जेल में, ये तो आप सबकी जरूरत है, जैसे मैं मुंबई को चाहिए पटेरी को 12 डब्बे रेल के, मैं चल दूं अकेले मैं लिखूं अकेले मैं बजूं अकेले। What's up, it's Bobcat representing Bombay Basement. Right now we're in Christian Village, Kurla West Side, representing Bombay 70. That's one of the hip hop hubs of Mumbai. We've been pushing hip hop. We started when it wasn't as huge as it is. It's blown up now. It's gone mainstream, you can say. Yeah, but we started right from when it was almost a hippie like thing. Where you at? Come on. काम बच्चे से मत दिखा, बत्ती से मर जाएगा गलती से, गायब तू धरती से, चलता ये शेर बोले अपने ही मर्जी से, गर्दी में फर्क नहीं चलती। Today, actually, we are organizing what we call the Rasta Gully Jam. So, Rasta Gully Jam is more of reggae influenced. But if you know the history of hip hop, you know hip hop and reggae come from the same place. These are all influenced by Jamaican arts and the pioneers of hip hop who laid the groundwork in New York. A lot of them were Jamaican immigrants. So that's where we're coming from. That's why as a band we always fuse these two sounds together, because to us they're part of the same family. So for the Rasta Gully Jam, we are mostly promoting a lot of local acts. गली गैंग करी खली बली बैंग बैंग नंबर करी दो सारी टली पुली गैंग गैंग खली थोड़ी हेटर्स के थोड़े पे प्लान प्लान जो तोड़ेंगे अपनी तोड़ मोड़ी टैग टैग बजेगा ना थोड़ी भी चोट के बुल बुल खोटी में मेरे भी रोटी मिली है नहीं खोप देंगे मुझे नौकरी मिली है जैसे लॉकी का काम काज मेरा नाम बना काम बारी नदार मारी तो करो कार भाई नारे की चौक साथ के सब कुछ मैं झेलूंगा तेरे भाई तुझसे बोल इनको पेल लूंगा तेरे लिए वेस्ट
स्ट्रॉन्ग गाना चिस्मान शान मिट्टी में मिला दो इनको बना है कसानमान गली गैंग चली चाक की खोज में अब तारे हमें जानते लोग हैं काम हरी बारी काम ले लो जानकारी ले लो जानकारी काम बारी. When I first connected with a local hip-hop fraternity in Mumbai and in different parts of India, it wasn't that big. It was a niche kind of thing. So it wasn't something that was on the streets. It wasn't something that was with, for example, the lower economic categories. It was, I'm talking pre-internet. So you're talking about a time when you had to be connected that way. You had to be connected with someone from abroad to have any exposure to hip-hop. When hip-hop was blowing up in New York, this was an offshoot of DJing. And the essence of DJing was entertainment for people who cannot afford a fancy banquet hall with a band. So you get a DJ who's going to play for you the music. Right now you'll see DJing happening at the most prestigious places, but that's not what it was all about. It was really about trying to get entertainment when you cannot afford to go to a 5-star and get all that luxury and have a cabaret and all that kind of stuff. So because of that, it was always associated with coming from the rough parts of the US. You're talking of the Bronx, you're talking of Harlem, County LA, you're talking of Compton. So you're talking about all these rough neighborhoods. For me, I didn't think hip-hop was going to be able to get a foothold in India until when the commoners could connect with it, until when it followed a similar path, which may have seemed impossible 10 years ago, but that's the case right now. So it's very similar in that it's been owned by people who are using it to tell their own struggle. In my opinion, Indian hip-hop, not just gully hip-hop, is as real as it gets, at least at the moment. अब बहुत बेटे चुपचाप क्या घंटे का इंसाफ देश कैसे होगा साफ इनकी नीयत में है दाग सिर्फ करते रहेंगे बात अलग शक्ल वही जात वोट मिलने पर ये खास फिर गायब पूरे साल हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना Gully Boys had quite a big impact on the scene. It's kind of hard to argue that they haven't. It's made a lot of people who were not aware of what was happening in India in terms of hip-hop. Not just like hip-hop fans who were into international hip-hop, but also it's introduced hip-hop music to a lot of people who wouldn't have listened to international rap anyway. But it's done that in an accessible way and has done it through a story that works. Not that I'm the biggest fan of the movie, but it's a story that's well told and that works for the sort of audience that's what actor is aiming for. So in that sense, it was great. It's going to bring in a lot of money for artists. Bollywood has always taken, is always one step higher than any other art form because it is so commonly known, it is so popular, and it's result oriented. See, Bollywood has always played a very big role in the art industry. Or in the film industry, and when I say the art of film industry, everything leads to revenue, and revenue is very important. That's given. That sense is great. It's going to lead the scene to expand quite a bit. There's a lot of brands, a lot of labels who are now interested in sort of coming in, pumping in money, finding the next artist. So in terms of just the sort of critical infrastructure you need to support an independent scene and to grow it and make it big, I think Gully Boy is great. Bollywood as an industry, they want to cater to a very mass volume of audience. Right? So it's a mix of crowd who watches Bollywood movies. Now to cater to just one section of the society gets really difficult because there are a lot of efforts that are put into it. Lot of resources, time, energy, investment. So the impact of Bollywoodization is almost like not catering to one segment, but catering to the mass audience, but at the same time maintaining that sanity.
गली बॉय से एक अच्छी चीज़ है कि मतलब लोगों को पता चल रहा है कि ये रैपर मतलब हिप हॉप क्या है। जैसे कि वो लोग बॉलीवुड है तो थोड़ा टाइम पास तो दिखाएंगे ही, जैसे कि इतना मतलब हम लोग को भी इतना पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी लोगों को पता चलता है ना कि रैप क्या होता है, क्या उसमें दिखाया गया है, तो जैसे कि सब लोगों को पता चलेगा तो उससे क्या होएगा, क्रेज़ ज़्यादा बढ़ेगा। रैप को इतना वैल्यू नहीं था यहाँ पे, लेकिन गली बॉय आने के बाद बहुत से ऐसे रैपर्स हैं जो लोग छोटे छोटे गली से कोई भी हो, जैसे हमारे जैसे जिसको टैलेंट दिखाना है, फेम के लिए कोई नहीं कर रहा। ऑफकोर्स फेम तो मिलेगा, लेकिन अपना टैलेंट दिखाने के लिए कर रहे हैं कि खुद में क्या ये मतलब है कैपेबिलिटी। तो गली बॉय को लेके वो सब लोग में चेंज आया कि मतलब वो लोग और अच्छे तरीके से नज़रिए से देखने लगे रैप को कि हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। फ़ायदा हुआ है उससे फ़ायदा ये हुआ है जो आम पब्लिक होती है उन लोगों को समझ में आया। जैसे बिहार ये सब जगह पे पहले हिप हॉप नहीं था, अभी मतलब वहाँ के पब्लिक को समझ में आने लग गया, तो उसके वजह से मतलब ग्रोथ होने लगा हिप हॉप का। गली बॉय जो मूवी है उसके वजह से हिप हॉप नहीं आया। गली बॉय मूवी हिप हॉप के वजह से बनाना पड़ा, क्योंकि हिप हॉप इतना ग्रो हो गया था कि उनको उससे ज़्यादा पैसा कोई और मूवी बनाएगा तो नहीं कमा सकते थे। समझ लो, बॉलीवुड में क्या होता है, हीरो है, रैपर का रोल है, हीरो रैप सीख सकता है। कोई भी रैपर को 10,000 दो, 15,000 दो, हीरो उसके साथ रह के रैप सीख जाएगा, 1-2 राइम सीख जाएगा। बट ये लोग मीडिया में क्या बताते हैं कि ये यहाँ के रैपर्स को उठा रहे ऊपर, उनको एम्पावर कर रहे हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे बोलते हैं एम्पावर कर रहे हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि उठा रहे हैं, बट यहाँ पे चूसा जाता है कोई भी एक्टर को कि बी बॉयज़ पे मूवी बनाओ और आप ब्रेकिंग करो, फट जाएगी एक्टर। लेकिन कोई भी एक्टर ब्रेकर का रोल नहीं निभा सकता, वो उसके औकात के बाहर का बात है। वो करने के लिए उनको लाइफ देना पड़ेगा। अगर उन्होंने लाइफ दे दिया तो उनको कोई पूछेगा नहीं, उनके पास और भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं। आज भिखारी का रोल है, कल बिजनेसमैन का रोल है, उसके बाद चोर का रोल है, उसके बाद चर्सी का रोल है। रोल ही रोल है उनके पास, पैसा ही पैसा है। तो कोई भी एक्टर, उसको बेबी फ्रीज भी आता होगा, गांड फट जाएगी। ये औकात के बाहर वाला चीज़ है। तो कोई भी बॉलीवुड वाले लोग जब भी मूवी बनाते डांस को लेके, वो बॉडी डबल यूज़ करते। विंडमिल मारा, विंडमिल मारा, फिर खड़ा हो गया तो बड़ा रहेगा ऋतिक रोशन। चूतिया भाई। आपने बोला कि टैलेंट है, पैसा भी है, बहुत अच्छा बात है। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आए, जितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो नहीं आता है, क्योंकि लोगों को हिप हॉप नहीं मालूम। गली बॉय जैसा मूवी, जो भी मूवी बनता है हिप हॉप के ऊपर, वो एक्सप्लॉइट करने के लिए बनता है, उनका बैंक अकाउंट्स को भरने के लिए। गली बॉय देख के आपको असली हिप हॉप नहीं मालूम पड़ेगा। असली हिप हॉप आप गाना सुनोगे उसमें, असली हिप हॉप आप देखोगे नहीं उसमें। कितना कम क्राउड है यार। I can stand that's Bombay dude, like Hey, check out, it's Mr. Lash. Hey, check. हाँ, उदास चेहरा, ये दर्द कितना गहरा है खुदा से पूछता, ये वक्त कहाँ पे ठहरा है। जहाँ भी देखूं ये सबका झूठा पैरा है, तो चल कपट से बहरा समुंदर यहाँ बहरा है। निकल ती जान या नन्ही सी मुस्कान की सड़क पे रह के वो ढूंढे सर छुपाने की हैवान लोगों। Yo, what's up? My name is Achin and I go by the stage name of Noxious D. So at EDDB, I am the instructor for rap also. So basically what I do is I teach the kids, I take a more practical approach towards rap more than theoretical, because that's how I learned, and that's what I think makes a rapper a better MC. And the goal is basically not to be a rapper over here. Anyone and everyone can rap, but who's a good MC? There are very few MCs and a lot of rappers. So the goal is to make good MCs out of these kids. There is a certain notion about kids from Dharavi that of course Dharavi se hai, so like they're going to talk about being a gully rapper and being poor. That's what people have thought of people who come from Dharavi. And that's not the case actually, to be honest, because over here the kids, they come from families that are very sweet, very loving. They come from families that provide them everything. So here nobody is uneducated.
None of the kids are uneducated. They go to schools, colleges. So for them, I always make it a point that they don't run behind what's trending. Back to the the phase where Gully Boy wasn't there. I think that plays a very important role personally for us, because at that point in time even we were very new to hip hop. So we didn't know that in the future there's going to be a Gully Boy, which will actually also make a lot of people aware about hip hop, and especially rap, because a lot of emphasis was given on rap in Gully Boy. Verses are like so many different elements which actually binds hip hop together. It's that art form, a platform where they can voice themselves. They were doing it back home, but there were like a bunch of them, wherein they were doing it at an individual level. But the school actually gave them a platform to come together and voice themselves. And voice themselves in different forms, in the form of a rap, in the form of beatboxing, in the form of graffiti artwork, and b-boying as well. So what motivated them also is the availability of physical space, because that was lacking. The budding artists always struggle with resources, because they keep practicing on the streets, and which are not very welcoming, even by the neighborhood, by the community, by the society itself. So the school really gave them a beacon of hope, to come together. मचाएंगे पीछे तो ये और एक बंदा हमारा वो आने वाला, एंट्री मारने वाला है, बिग बॉक्स है। आ जा इसका सिद्धू ये क्या बोल जगा दी क्या हाँ चलो हाँ फ्रैंकी AKA MC यंग लॉर्ड हाँ नया दौर नया साल अपने हाथों की लकीर में बदल के रख देंगे हम आने वाले दिन में। हटकर तू सोचना क्योंकि बढ़कर यहाँ के रास्ते हैं, जब तक तू जिंदा है मुसीबतों को झेलता रहे। गरीबों के बस्ती में अमीरों का ना राज है, पब्लिक तो भूखी है पैसों के आगे नाचते हैं। दिखता इंसाफ पर वर्दी अपना कुछ नहीं करते ना काम, बस फुकट का कमाते हैं। बिक गई ये कोट काले सूट अपने नोट से, फुकट का कहते रहते सत्य में विजय थे। हाँ सत्य में कोई भी काम में आप कर रहे हो, जो जॉब भी कर रहे हो, तो आपको सैलरी तो मिलेगी, पैसे तो मिलेगी। तो मतलब एक आर्टिस्ट को ऐसा भी रहेगा, हाँ चलो पैसे भी मिलेंगे। पर ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो लोग ने पैसे के लिए काम नहीं करते, जो लोग करते अपने टैलेंट के लिए, अपना नाम फैलाने के लिए। हम लोग तो इस वजह से करते हैं, हम लोग पैसे की चिंता नहीं करते। हम लोग कहीं भी जाते हैं हम लोग पैसे के बारे में नहीं सोचते, हम लोग बस अपना टैलेंट जाहिर करते लोगों को। हमारा जो दर्द है वो हम लोग लिरिकली बताते म्यूज़िक पे, ऐसा रैप होता है। Today I have hosted a compliment rap battle for the kids. So they are going to take a very different approach towards battle, because usually in battles you have to diss the other person, you have to like go on to like you have to demean the other person in a way. Okay? And that shows your lyrical progress, of course. But now I was thinking that let's take an approach that's very different, like a compliment rap battle where the kids have to compliment each other. It's very difficult because in this day and age, nobody likes anyone. Okay? And unison and unity is what makes hip hop better. आज होने वाला है कॉम्प्लीमेंट बैटल।
तू जो भी काम करता ना, हम सबको तुझ पे नाज है। तू जो भी काम करता हम सबको तुझ पे नाज है। तू एक ही है बंदा जो मेरा खास है। तेरे पास जो कला है ना वो कम जन के पास है। तेरे पास जो कला है ना वो कम जन के पास है। तू एक असल है और बाकी सब बकवास है। इसके पीछे ना पूरे लड़की लोग की लाइन लगती है और ये मुझे बहुत तकलीफ देता है और मुझे लाइन में खड़ना पड़ता है लड़की लोग का टिकट लेते हैं इसको देखने के लिए। तू बहुत चतुर और बुद्धिमान, तुझे देख लगता है आया नए युग का नया तेनालीराम। जब बात करूं तेरे चरित्र की, तुझ में दिखते हैं मुझे साक्षात विष्णु भगवान। मेरे दोनों हाथ जोड़कर प्रभु आपको करता हूं मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैंने पी लिया जहर, जरा मुझे खुश कर। बातें नहीं कुछ गाते सही, खत्म जवाब